Hi friends, I am CA Anita Agarwal. In this video, I would like to share with you all my views on impact on MSMEs of budget 2023-24. MSMEs are the important sector in Indian economy. They are the growth engine of India and contributes almost 30% to the GDP of India. It is the biggest source of employment in India. What is MSME? MSME is a micro, small and medium enterprise. Definition of MSME has been reclassified with effect from 1/7/2020. Now, micro enterprises are those enterprises in which the investment in plant and machinery is up to 1 crore and the turnover is up to 5 crore. Small enterprises are those in which the investment in plant and machinery is up to 10 crore and the turnover is only up to 50 crore. In the case of medium enterprises, the investment in plant and machinery is up to 50 crore and the turnover is up to 250 crore. Now we come to the various supportive measures which has been taken by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman in the budget 2023 in support of MSMEs. The first in this regard is Credit Guarantee Scheme. Last year, the Finance Minister has proposed the revamping of the Credit Guarantee Scheme for the MSMEs and it was made effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crore in the corpus. This was enabled with additional collateral-free guaranteed credit for rupees 2 lakh crore. इस स्कीम से MSMEs को ये बेनिफिट होएगा कि अब उन्हें रिड्यूस्ड इंटरेस्ट पे लोन आसानी से मिल सकेगा. The second proposal which was made for MSMEs was Vivad Se Vishwas 1. In cases MSMEs has failed to execute the contract during the COVID period, 95% of the forfeited amount related to the bid or performance security had to be returned by the government and government undertakings. कोविड के पीरियड में MSMEs को जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे उसके लिए उन्हें परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट करनी पड़ी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे ना हो सके और गवर्नमेंट ने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वोक कर दिए और उनका सारा पैसा फॉरफिट हो गया. इस स्कीम में फाइनेंस मिनिस्टर ने 95% ऑफ द फॉरफिटेड अमाउंट को उन्हें वापस करने का प्रपोजल रखा है. नेक्स्ट कम्स द एंटिटी डिजी लॉकर. इस स्कीम के हिसाब से जो भी MSMEs के रिकॉर्ड्स हैं एज रिलेटेड टू द क्रेडिट वर्दीनेस या फिर उनकी KYC हो या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, उन सबको एक जगह डिजिटली स्टोर कर दिया जाएगा and this will help the companies to store the documents online securely so that these can, whenever be needed, shared with other authorities, regulators, bank and other business entities. इससे MSMEs को ये बेनिफिट होएगा कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्टोर कर लिए जाएंगे और they can now carry on the business with ease. They do not have to hunt for the documents. अपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स के लिए उधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. जब भी उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल डील करनी है अपनी क्लाइंट्स के या बैंक को लोन के लिए अप्लाई करना है या किसी भी रेगुलेटर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने हैं, तो वो एक क्लिक से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं. The micro enterprises before this budget could avail the presumptive taxation scheme up to the limit of 2 crore, which after the budget has been extended to 3 crore. And in the case of professionals and service provider, this limit has been extended from 50 lakh to 75 lakh, providers the cash receipt of none of these taxpayers should be more than 5%. Now, in case of the startups,
the date of incorporation in order to avail the income tax benefit has been extended from 31st March 2023 to 31st March 2024, and the time limit for setup and carry forward of losses has been extended from 7 years of incorporation to 10 years of incorporation. Amendment in Section 43B will provide a big relief to the MSMEs. ये उन सब बिजनेसमैन के लिए अलर्ट है जो कि MSME की पेमेंट करने में लापरवाही करते हैं. As per the Section 15 of MSMED Act 2006, if any payment which is due to a micro and small enterprises, and if it is not paid within a period of 45 days in the case of a written agreement, and a maximum period of 15 days if there is no written agreement, these expenses will not be allowed under Income Tax Act. A new clause has been inserted in Section 43B of Income Tax Act in this regard, and which is applicable only to the micro and small enterprises, where the expenses will be allowed only on actual payment basis. In this case arises the reporting liabilities of tax auditors. टैक्स ऑडिटर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी बिजनेसमैन ने अगर MSME की पेमेंट समय से नहीं की है तो उसके वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड कर दिए जाएंगे. It is my request to all the MSMEs and startups, जिन MSMEs और स्टार्टअप ने अभी तक अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, प्लीज़ करवा लें. इससे you can avail the various government grants and benefits. अगर आपकी कोई भी डाउट्स और क्यूरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम. और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.